Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the cytoskeleton. So let's move to the whiteboard. Cytoskeleton. So what is cytoskeleton dear students? ग्रेड 9 में आपने पढ़ा था इसके हवाले से कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे. अब हम इसके थोड़ा सा एक्सटेंशन में देखते चलकर. So the cytosol consists of cytoskeletal protein fabric called cytoskeleton. So dear students, it's a protein fabric. अगर हम इसके सिर्फ लिटरल मीनिंग पे जाएं तो साइटो मीन्स सेल एंड स्केलेटल और skeleton means a framework of interconnected structures providing support so it is the skeleton of the cell. जिस तरह से dear students हमारा skeleton है, we have got endoskeleton और इस skeleton ना सिर्फ हमारी शेप को मेंटेन कर रहा है, मीन्स किसकी वजह से हमारी शेप डिटरमिन होती है, ना ही बल्कि इसके साथ साथ ये हमें मूवमेंट्स भी प्रोवाइड कर रहा है. क्लियर? या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर रहा है. लाइक दिस इज माय फिंगर्स, आई एम टचिंग माय फेस और आई एम ग्रिपिंग दिस. सो ये कनेक्ट कर रहा है एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट के साथ. सो उसी तरह से सेल का भी एक स्केलेटन होता है जो कि उसको उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए, उसके अंदर कोई मुख्तलिफ तरह की मूवमेंट्स को जो है वो सपोर्ट देने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है. सो दैट इज टर्म्ड एज साइटोस्केलेटन. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने बात की कि दैट इज बेसिकली अ प्रोटीन फैब्रिक. इट्स अ प्रोटीन फैब्रिक, यानी बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. सो the proteins in cytoskeleton तो वैसे तो बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, लेकिन जो मेजर प्रोटीन्स हैं वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, वो जो मेंशन्ड है, दे आर ट्यूबुलिन, number 2, actin. Number 3, tropomyosin. Clear? और dear students, ये जो सी प्रोटीन्स हैं, जो ट्यूबुलिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ये बेसिक प्रोटीन्स हैं जो कि साइटोस्केलेटन को बनाने में मददगार शामिल होती हैं. इसी तरह से एक और वाइमेंटिन, that is another protein which is present cytoskeleton structure. जहाँ तक बात है ट्यूबुलिन की, ये आम तौर पर बेसिकली ये सपोर्ट के ज़ुमरे में आता है.
It provides support. Clear? जबकि actin, tropomyosin, these proteins are involved in the contraction and relaxation. ये contractile proteins हैं. Clear? These are the contractile proteins. और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स डियर स्टूडेंट्स कौन से होती हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने शॉर्ट होने की और एक्सटेंड होने की एबिलिटी रखी होती है. मतलब ये सिकुड़ भी सकती हैं, मतलब कि इनका जो साइज़ है वो कम भी हो सकता है और वापस अपनी ओरिजिनल शेप में ये वापस भी जा सकती हैं. सो दैट इज़ व्हाई दे आर कॉल्ड एज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. नाउ कमिंग टू द साइटोस्केलेटन. द साइटोस्केलेटन consists of three main components. That are number one, the microtubules, number two are the intermediate filaments, and number three are the microfilaments. So these three are the basic components of our skeletal system. Now, dear students, we will discuss them in details. So first of all, there is microtubules. There are microtubules. So dear students, microtubules they are made up of a special protein called tubulin. And among the components of cytoskeleton, microtubules are of largest diameter. इनका diameter इन तीनों filaments में microtubules, intermediate filaments and microfilaments, इन तीनों की निस्बत सबसे largest diameter जो होता है वो microtubules का होता है. Clear? And they are unbranched means कि बिल्कुल स्ट्रेट अवे प्रोटीन्स हैं. अभी थोड़ी देर में मैं डायग्राम भी इसकी ड्रॉ करूंगा, उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा. इनकी कोई ब्रांच नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट अवे जाती हैं.
and slender. They are unbranched and slender filaments. क्लियर? स्लेंडर अनब्रांच्ड का मतलब समझ आ गया, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट अवे, जैसे कि बिल्कुल ये आपको मार्कर नजर आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट अवे, कोई इनकी ब्रांच यहां से नहीं निकल रही. नंबर 2, दे आर स्लेंडर. स्लेंडर का मतलब होता है बारीक, थिन. दे आर थिन फिलामेंट्स. नाउ देयर फंक्शंस. They have got very, very important functions. Number 1, they are involved in the assembly and disassembly of microtubule, or which we call them microtubules or the spindle fibers, during cell division. क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आइडिया आपको होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा सेल साइकिल, और सेल साइकिल में आपने पढ़ा उसकी मुख्तलिफ फेजेस होती हैं. उसकी दो मेजर फेजेस, इंटरफेज एंड द माइटोटिक फेज. इंटरफेज में सेल अपने आप को डिवाइड होने से पहले प्रिपेयर कर रहा होता है, जिसकी आगे फर्दर हमने बात की थी कि 3 सब फेजेस होती हैं, द G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. क्लियर? और उसके बाद होती है डिवीजन की फेज, प्रेपरेशन के बाद डिवीजन फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज कहते हैं. क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे सेल साइकिल में बेसिकली सेल साइकिल में होता क्या है कि एक सेल जो है वो कंप्लीटली डिवाइड होता है इनटू 2 सेल्स. एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा 2 डॉटर सेल्स में. तो इस दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि मौजूद है पेरेंट सेल के अंदर, उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो मेजर रोल प्ले करता है, दैट इज द माइटोटिक स्पिंडल, या जिसको हम माइटोटिक अपरेटस कहते हैं. और माइटोटिक अपरेटस किससे बनता है? दैट इज फॉर्म्ड ऑफ द सेंट्रियोल्स. और सेंट्रियोल्स किससे बनते हैं? दे आर मेड अप ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स. और जब सेंट्रियोल्स अपने फाइबर्स को एक्सटेंड करते हैं, they are helpful in the cell division. So let's suppose this is a cell which is undergoing division. So these are the spindle fibers to which the chromosomes are attached. Clear? Or in order to make the equal distribution of chromosomes, the spindle fibers are much more necessary. इसके बगैर जो equal distribution है, यानी cell division जो होती है, वो possible नहीं होती. तो ये जो से microtubules हैं, जब आपने पढ़ा था, जो प्रोफेज होती है उसमें ये माइटोटिक स्पिंडल्स बनते हैं. ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं. माइटोटिक अपरेटस जो है वो ऑर्गेनाइज होता है. और एट द एंड जब जो चौथी फेज होती है कैरियोकाइनेसिस की, दैट इज टीलोफेज, उसमें ये दोबारा से डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं. ठीक है, वो माइटोटिक जो स्पिंडल्स बने थे वो सब के सब वापस खत्म हो जाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, या इसको हम कहते हैं असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ द spindle fibers. So these are the spindle fibers, जो कि कहां से बन रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बन रहे हैं. So this is how they help in the cell division. Clear? Another very important function, that is number 2, very important function. They are involved, means the microtubules, they are involved
in the formation of various structures, और इनकी वजह से कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं. वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू कि माइक्रोट्यूब्यूल से कौन से 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं. ये 4 ऑर्गेनल्स आमतौर पर हम उनको कह सकते हैं और जो बन रहे होते हैं. नंबर 1 cilia, number 2 flagella, number 3 the basal body, and number 4 the centrioles. So it is very very important regarding the short questions and as well as the MCQs. Clear? तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जिनकी फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा है? द माइक्रोट्यूब्यूल्स. अच्छा, इसमें आ जाते हैं थोड़ी सी इनकी आपको कॉन्सेप्ट देता चलूँ. होपफुली आपको पहले से भी होंगे. तो सीलिया, सीलिया इट इज़ बेसिकली द प्लूरल ऑफ सीलियम. सीलियम आगे चल के हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स के अंदर उसमें सीलिएट्स लाइक द पैरामीशियम. So this is a paramecium that is basically a ciliate, or it is surrounded by hundreds of appendages which are called as cilia. और जो cilia क्या हैं? They are the locomotory organs. Okay? So this is paramecium. That is a ciliate. Clear? और ये सारे इसके क्या मौजूद हैं? All these are the cilia. और इस एतबार से डियर स्टूडेंट्स ये cilia जो हैं they have got locomotory function. तो प्रोटोजोन्स के अंदर खास तौर पर सीलिया इस तरह से मदद करते हैं. इस तरह फ्लैजेला, फ्लैजेला भी आपने पढ़ा डियर स्टूडेंट्स. बैक्टीरिया इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर. सो दिस इज बैक्टीरिया. अब सिंगल इज बैक्टीरियम. क्लियर? and here is its chromosome, and some ribosomes, and over here there is a structure which is called as basal body, to which there is attached the flagella, the flagellum. Clear? The singular is flagellum. So that is flagellum. और यहाँ पर जो ये flagellum जिसके साथ अटैच है, ये वाली जो आपको ब्लू कलर में स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, that is called as the basal body. ये बेसिकली इसको flagella की जो उनकी रोटेटरी मूवमेंट होती है, लोकोमोशन में हेल्प करता है. क्लियर? So that is its genetic material. And this is basically a bacterium, a typical bacterium. Clear? तो flagella भी locomotory organ है और इसकी basal body to which the flagella is attached. Clear? ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर होगी. और चौथी चीज़ centrioles. इससे अगला ऑर्गनल हमारा वही है, उसको हम इंशाल्लाह उसमें डिटेल से देखेंगे. ये बेसिकली 2 centrioles. This is an organelle which is present on the exterior of the nucleus. वहाँ पर इसमें 9 tubules होती हैं which are further made up of triplets. So that helps in the formation of these spindle fibers. Clear? So that is about the microtubules. Now, number 2.
are the intermediate filaments. Clear? So intermediate, इनको intermediate filaments इसलिए कहा जाता है, these filaments have the diameter in between microtubules and the microfilaments. Clear? सो इनको इंटरमीडिएट कहा भी सिर्फ इसलिए जा रहा है कि इनका जो साइज होता है, इनका जो डायमीटर होता है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जिनका डायमीटर लार्जेस्ट साइज में है और माइक्रोफिलामेंट्स इनका जो सबसे स्मॉलेस्ट है, इनका उनके इंटरमीडिएट है, उनके दरमियान में है. ठीक है, इट इज इन बिटवीन द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द माइक्रोफिलामेंट्स. क्लियर? नाउ इट्स फंक्शंस. As far as their functions are concerned, so intermediate filaments, they are involved in the maintenance of cell shape they are involved in the integration of cellular compartments मीन्स कि जो सेल है उसके अंदर ऑर्गेनेल्स के मुख्तलिफ जो होते हैं वो स्पेसिस होती हैं कि इस जगह के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया फिट होगा, इसमें जगह के ऊपर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिट होगा. तो कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, तो उन कंपार्टमेंट्स को आपस में जोड़ के रखता है और उनको अलग-अलग रखता है. दैट इज़ व्हाट इट हेल्प्स द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. मीन्स कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इनको जो कंपार्टमेंटाइजेशन होती है उनको मेंटेन करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं. क्लियर? एंड दे ऑल्सो provide physical support to the cell. Physical support का मतलब कि उसको physically उसके जो framework है उसको maintain रखेंगे. Clear? And the third category is the microfilaments. So as the name indicates, they are of the smallest diameter. These filaments are of smallest diameter among the components of cytoskeleton. सबसे smallest diameter. Clear? They are more slender. They are more slender and cylinders are cylindrical in shape.
मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा, सिलेंडर किसे कहते हैं, जिसकी एक प्रॉपर लेंथ हो और उसकी प्रॉपर डायमीटर हो, मेंटेन्ड डायमीटर हो, उसे हम सिलेंडर कहते हैं। और यहाँ पर सिलेंडर का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि बारीक, तो ये सबसे दे आर मोर सिलेंडर मीन्स ये इन सबसे बारीक होती हैं, क्लियर, हैविंग मेंटेनिंग द सिलेंड्रिकल शेप, क्लियर। एंड as far as their functions are concerned, so number one, they are involved in the formation of cleavage furrow. Clear? Number two, involved in amoeboid movement. And they're also involved in internal cell motion, which is also called as cyclosis. So how? तो dear students, जब कैरियोकाइनेसिस हो चुकी होती है, मीन्स when the कैरियोकाइनेसिस is completed, आपने पढ़ा था, तो अब सेल के बिल्कुल सेंटर से एक गड़ा सा बनता है, एक डिप्रेशन सा बनता है, जहां से जो सेल है वो डिवाइड होना शुरू होता है, ठीक है। सो कैरियोकाइनेसिस हो चुकी, दो न्यूक्लियाई बन चुके, ये उनके अंदर उनका जेनेटिक क्रोमैटिन जो है वो मौजूद है। तो एट द सेंटर ऑफ दिस सेल देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस वन, अ डिप्रेशन कॉल्ड एज क्लीवेज फरो। क्लीवेज मीन्स टू स्प्लिट एंड फोरो मीन्स डिप्रेशन। तो इस पॉइंट से ये सेंटर की तरफ जो है वो आना नीचे शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली मूविंग डाउन एंड डाउन टुवर्ड द सेंटर एंड मेकिंग द टू सेल्स सेपरेटेड, क्लियर। तो इस तरह से एक तो माइक्रोफिलामेंट्स वहाँ पर हेल्प करेंगे। नंबर टू, दे आर इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। इंशाल्लाह इन सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 16 आप उसमें पढ़ेंगे, चैप्टर के एंड के ऊपर ये टॉपिक मौजूद है, लोकोमोशन इन अमीबा। तो अमीबा आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज बेसिकली एन इर्रेगुलर शेप्ड प्रोटिस्ट, इट इज प्रोटिस्ट, बेसिकली अ प्रोटोजोन, ठीक है। तो अब अमीबा के पास जो है वो मूव करने के लिए ना तो सीलिया है ना फ्लैजेला है। तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह से, लेट्स सपोज दिस इज अमीबा, its nucleus, so along the its diameter इसमें इस तरह से कुछ फिलामेंट्स मौजूद होती हैं, these are the microfilaments, these are microfilaments, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इसी की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये अमीबा जो है वो मूव करता है। और एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये मूवमेंट होती है जो सिर्फ और सिर्फ अमीबा के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसे कहते हैं अमीबाइड मूवमेंट। तो उसमें भी जो बेसिक रोल है दैट इज ऑफ द माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। इसी तरह से इंटरनल सेल मोशन जो हमने प्रीवियस साइटोप्लाज्म में भी डिस्कस किया था कि जो सा सेंट्रल पोर्शन होता है अराउंड द न्यूक्लियस, जो साइटोसोल होता है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा होता है इस तरह से इन सर्कुलर फैशन। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इनमें बेसिकली they are made up of actin and tropomyosin, खास तौर पर माइक्रोफिलामेंट्स जो मेजर प्रोटीन है, so the major protein is actin, ठीक है। इसी तरह से ट्रोपोमायोसिन भी है जो ये मस्कुलर प्रोटीन्स हैं, मसल्स के अंदर मौजूद हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया इसका, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की एबिलिटी रखती हैं, क्लियर। सो इनकी वजह से जो साइक्लोसिस यानी इंटरनल सेल मोशन जो होती है वो इन्हीं की बदौलत हो रही होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे सेंट्रियोल्स। सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।